Right. Hey, good afternoon all and welcome to another live session of Techknowledge Talk. This is your host Vinit Narvekar and today we are going to talk on CCTV troubleshooting. Yes, today's topic is something different. It's related with the technical troubleshooting of your CCTV cameras and NVR system. Hope you all are doing well and you are all connected with me live now on this Techknowledge Talk. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ज्वाइनिंग आप सभी का इस टेक्नोलॉजी टॉक में मैं विनीत नार्वेकर स्वागत करता हूं एंड आज का जो सेशन है हम जरूर डिस्कस करने वाले हैं सीसीटीवी के ट्रबल शूटिंग्स के ऊपर. यस, मोस्ट ऑफ द लोग हमारे पार्टिसिपेंट जो है यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास के ऊपर काम करते हैं. So you know all that CCTV cameras, especially the IP CCTV cameras. So we are facing a lots of issues while installing or while live view, while configuration of the analytics of this camera, either for the Hikvision or any other brand with Hikvision devices. So for that, today this session is specially to discuss on the different types of problems which our customers are regularly facing. सो विद दिस टेक्नोलॉजी टॉक आप सभी का बहुत सारे इनपुट्स हमें आ रहे हैं, आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स हमें आ रहे हैं कि सर अलग अलग कुछ टॉपिक से अलग कुछ इश्यूज है, उसके ऊपर भी ये टेक्नोलॉजी टॉक जरूर कीजिएगा. एंड टुडे हियर वी आर विथ यू फॉर सीसीटीवी ट्रबल शूटिंग टॉपिक. सो यूजर्स के इनपुट्स जो है उस हिसाब से हम इस टेक्नोलॉजी टॉक का ये ट्रबल शूटिंग का टॉपिक जो है ये हम आज आपके सामने लेके आए हैं. So with the base of the user comments, okay, users are experiencing so much of the problems on sites. आप जो sites के ऊपर problem face करते हो उसी problems को लेके आज का ये trouble shooting का technology talk आपके सामने मैं पेश करने वाला हूँ. And with this we will discuss one by one the question which arises you on your sites. Okay, so we have selected some important question which most probably question asked by the most of the users and we will discuss answer on this. कुछ ऐसे क्वेश्चन हम देखेंगे जो ज्यादा करके लोग हम पार्टनर्स हमारे इंस्टॉलर्स हमारे फेस करते हैं साइट के ऊपर. जब आप इंस्टॉलेशन करते हो उस वक्त ये कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो एंड उस प्रॉब्लम्स के ऊपर कुछ मैं सॉल्यूशंस आज लेके आया हूँ. कैसे उस प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो, क्या उसका करेक्ट मेथड है टू कॉन्फ़िगर दैट पर्टिकुलर issues or that particular setting inside your camera and your NVR. Hope you all are connected and if you are viewing me properly and if you are able to listen me properly, please type in the comment section your name, your company name and your city name. देखते हैं आज इंडिया से किन किन शहरों से आप मेरे साथ इस टेक्नोलॉजी टॉक में प्रामा इंडिया ऐप पे ज्वाइन हुए हो. कम ऑन एवरीवन, please type your name of the city and your company name or your name. Definitely we'll start the welcoming to all of you that you all are connected on Prama India app today on this troubleshooting topic. SG Infotech, hello sir, how are you? Shriram Computers, hi sir, how are you? So you all are connected always. Definitely each and every sessions को जब देखते हैं हमारे ये partners है बहुत सारे connect होते हैं and they are discussing more and more with me. So that is the meaning of this technology talk. In the live session, we are going to discuss all the technology solutions and the latest products. So today here we are going to discuss on the CCTV troubleshooting topic where we are discussing some of the common important questions which are mostly asked by our most probable installers in the market. So like way आने लगे हैं सबके वहाँ पे comments. Yes, Mr. Sarnaraj VCAM Solution, welcome sir in the technology talk. High-tech system Ravish Garg इंदौर से ज्वाइन हुए हैं. कैसे हो सर? एंड टेक्नोलॉजी टॉक का में आपका बहुत बहुत स्वागत. एंड मिस्टर संदीप घोष फ्रॉम कोलकाता, ओके, एंड ओम कंप्यूटर दे आर आल्सो ज्वाइन. सो फ्रॉम द इंदौर, कोलकाता एंड साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सभी शहरों से आप ज्वाइन हुए हो इस टेक्नोलॉजी टॉक को. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू अगेन. And we will start this technology talk today on CCTV troubleshooting. Okay, if you have any kind of doubt, definitely you can type in the comment section. I will try to give the answer of your all queries as well as you can discuss this what kind of the better solution if you require in the future. Definitely we will can come with your solution requirement.
सो आज का जो सेशन है हम स्टार्ट करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन on the CCTV troubleshooting. Most of the users is already joined with us and they are waiting to start this session. So through presentation, I will discuss you one by one a most common question which is asked by our user, and we will discuss the answer on this. So mostly we will start the first topic which we are discussing is RTSP. Yeah, right. How to use RTSP. RTSP कैसे यूज करना है, बट बिफोर दैट वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द व्हाट इज आरटीएसपी. राइट, आरटीएसपी ये क्या है, कैसे ये काम करता है और इसकी मदद से हम हमारे सीसीटीवी में इसका क्या यूज कर सकते हैं. सो लेट्स वी विल डिस्कस ऑन द आरटीएसपी फर्स्ट. सो थ्रू प्रेजेंटेशन आई विल स्टार्ट हाउ टू यूज आरटीएसपी. ओके, so how to use the RTSP, that means the RTSP, first of all, if you are going to discuss, it's a real-time streaming protocol. Yes, RTSP is a real-time streaming protocol where you will get the real-time streaming from your camera. So RTSP protocol basically a real-time streaming protocol है. It's most probably used in the video devices as well as in your cameras also. सो आपका कैमरा है, इसके अंदर भी ये RTSP प्रोटोकॉल है. इसकी मदद से आपका कैमरा जो है ये आपको एक लाइव स्ट्रीमिंग विथ वीडियो एंड ऑडियो आपको प्रोवाइड कर सकता है. सो व्हाट द हेल्प ऑफ दिस, यस डेफिनेटली दिस प्रोटोकॉल इज गेट इम्प्लीमेंटेड. ये प्रोटोकॉल अलग अलग डिवाइसेस में इम्प्लीमेंट किया है जिसकी मदद से हर डिवाइस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है. So that means especially for video and audio transferring, we can pull out the video and audio video and audio footage from your camera. So this protocol can be used with communication of the different manufactured devices. So ये RTSP protocol की मदद से हम CCTV कैमरास की जो लाइव स्ट्रीमिंग है ये आप होल्ड कर सकते हो आपके NVRs के अंदर. So lightweight, this can be helpful in multiple way. बहुत सारे वे में इसको यूज आप कर सकते हो. सो जैसे कि आपका कोई भी कैमरा है ये आप हिकविजन के NVR में ऐड करते हो, उस वक्त आप हिकविजन प्रोटोकॉल्स वहां पे सेलेक्ट करते हो. यू आर यूजिंग अ हिकविजन प्रोटोकॉल व्हेन यू आर एडिंग योर कैमरा इनसाइड योर NVR. बट देन व्हाट इज द यूज ऑफ द RTSP, व्हेन वी कैन यूज दिस RTSP. सो यस, वी विल सी अबाउट दिस. सो बेसिकली फर्स्ट हमने देखा कि what exactly the RTSP. Now especially for the part of the CCTV cameras के अंदर ये RTSP protocols वहाँ पे अवेलेबल है और जिसकी मदद से आप ये रियल टाइम जो है ये स्ट्रीमिंग इस कैमरा से कोई कर सकते हो. So that when you require to use the RTSP, कहाँ पे इसका यूज होगा, स्पेशली अगर आपका कैमरा एक ब्रांड का है एंड दूसरे ब्रांड का आप अगर NVR यूज कर रहे हो और उस ब्रांड के अंदर आपको लाइव स्ट्रीमिंग देखनी है, या आपका कैमरा किसी एक ब्रांड का है एंड यू आर गोइंग टू यूज वन काइंड ऑफ द सॉफ्टवेयर टू गेट द लाइव स्ट्रीमिंग. ऑन दैट टाइम if your camera support the real time streaming, then definitely you can get the real time streaming on your software. So जैसे कि हम देखते हैं कि कैमरा आपने IP कैमरा CCTV कैमरा यूज किया है, बट उस CCTV कैमरा का लाइव फुटेज जो है ये आपको NVR में नहीं बल्कि आपको YouTube के ऊपर ट्रांसमिट करना है. तो उस वक्त आपको ये RTSP streams वहाँ पे यूज होगा. As well as if you require to get this application, the live view of your camera on particular software, you can use the RTSP streaming of your camera. So in short, आपके कैमरा से रियल टाइम में वीडियो एंड ऑडियो इनपुट्स लेने हैं, then definitely you can use the RTSP streaming. Now for the Hikvision cameras and NVR, when you require to RTSP streaming, because Hikvision के cameras और NVRs की अगर आप बात करें, you are simply adding this camera with Hikvision protocol in Hikvision NVR. But then when you require to use this camera with RTSP streaming, क्या रीजन है हो सकता है? Yes, we will discuss today on the same. अगर आप Hikvision का कैमरा एंड NVR आप यूज कर रहे हो तब बहुत सारे इश्यूज वहां पे आते हैं. जब आपका एक सेम कैमराज है, ये सेम कैमरा आप आपके मल्टीपल NVRs में वहां पे ऐड करते हैं. So what is the issue? What is the problem we are facing in that? कैमरा एक है बट कैमरा ऐड हुआ है मल्टीपल NVRs के अंदर, then definitely this every NVR, each and every NVR start synchronizing with your camera, right?
each and every NVR start synchronizing with your camera, and definitely the camera timing will get changed. So that is the reason to use the RTSP streaming over here to add the same camera in the multiple NVRs. So lightweight through presentation here we will see the need when to use the RTSP. When the camera is added to multiple NVR through Hikvision protocol or the web protocol, NVR will sync camera time. Yes, अलग अलग NVRs के अंदर आप कैमरा जब ऐड करते हो तो NVR कैमरा का टाइमिंग जो है ये सिंक्रोनाइज कर देता है. If the multiple NVRs are running, yes, आपके केस में multiple NVR अगर वहाँ पे है, then with the different time camera time will switch continuously frequently. So lightweight फर्स्ट एनवीआर का टाइमिंग कुछ अलग है, सेकेंड एनवीआर का टाइमिंग कुछ अलग है, थर्ड एनवीआर का टाइमिंग अलग है. सो कंटिन्यूअसली आपके आईपी कैमरा का जो टाइमिंग है ये स्विच हो सकता है. उसके लिए आपको आरटीएसपी स्ट्रीमिंग यूज करना जरूरी है. हाउ वी कैन यूज दैट वी विल डेफिनेटली डिस्कस, बट यू अंडरस्टैंड रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल के जरिए आपको डायरेक्टली कैमरा से आप वीडियो एंड ऑडियो का स्ट्रीमिंग ले सकते हो. This is the RTSP protocol is already available inside your network camera. So there is a command we require to provide when you are trying to add this camera in your NVR. So how to use that RTSP, that we require to understand. So जैसे कि आप देख पा रहे हो, we will see on the screen RTSP streaming, how to use it. Yes. Open the NVR menu and input the RTSP path and command followed by the username and password of the IP camera, and based on receiving this information, IPC will send a real-time video streaming on NVR. So that's the simple logic behind the RTSP, how it can be communicate this camera with your NVR, how we require to ask to get the stream from the RTSP. So there will be the required to put up the specific command related with that camera in your NVR. So this will work like this. आपका NVR connected है, your NVR is connected with the switch, and RTSP command gets sent to your cameras, and camera then send the video streaming to your NVR. So this is a simple, basically how it will work. Through a RTSP streaming, your camera separately provide the live view, that is video footage and the audio with RTSP streaming, and you can add your camera in NVR through RTSP streaming, which helps to avoid the time changing issues. So this is a concept how we can connect it. NVR है जहाँ पे NVR आपके अंदर आपको एक कमांड वहाँ पे टाइप करनी है, और वो कमांड टाइप करने के बाद वहाँ पे डेफिनेटली दिस कैमरा will get connected with your NVR. So that is a basic logic behind of this. Now how to configure that? If you require to add the IP camera through RTSP streaming, RTSP streaming के जरिए आपको IP कैमरा आपके NVR में ऐड करना है, तो कैसे ऐड करते हैं वो बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट है. So hope you have understood the complete GUI. GUI जो ऑपरेशन है ये आप सभी को पता है कि NVR का मेनू ऑपरेशन हम कैसे करते हैं. अलग अलग सेटिंग्स है, कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स है, नेटवर्क की सेटिंग है, कैमरा एडिंग की सेटिंग रहती है, प्लेबैक की सेटिंग्स रहती है. सो यू रिक्वायर टू गो द कैमरा एडिंग ऑप्शन, जहाँ पे आपको ये जो IP कैमरा है ये RTSP प्रोटोकॉल के थ्रू वहाँ पे ऐड करना है. सो व्हाट इज द स्टेप फॉर दैट? Let's on the presentation we will discuss on that particular steps. So if you are going to see the steps for the RTSP, जैसे कि इसके अंदर steps अगर हम देखेंगे, but yes, before that would like to inform RTSP protocol. Okay, when camera added by the RTSP protocol के जरिए कोई भी कैमरा अगर ऐड होता है, it will gives you a live view, recording, playback function, and it does not support the PTZ control function, or does not support to modify the camera parameters or any kind of the OSD configuration. So that's something of the important. We have seen that अगर आपका RTSP protocol के जरिए आप कैमरास ऐड करते हो, so it can be help only for you getting the live view and the playback on your NVR. So that keep it note. अगर आपका PTZ कैमरा है, you cannot operate that particular PTZ camera. It will not support that functions. So we have seen that
अबाउट दिस ITSP प्रोटोकॉल। तो जहाँ पे हमने देखा कि ITSP प्रोटोकॉल की सबसे पहले यूज क्या है, हमें इस ITSP प्रोटोकॉल के थ्रू हमारे कैमरा जो है हम हमारे NVR में ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल NVR के अंदर आपको सेम कैमरा ऐड करना है, आप ये ITSP कैमरास के थ्रू ऐड कर सकते हो। एंड हाउ वी कैन ऐड, लेट्स वी विल डिस्कस ऑन दिस थ्रू दिस सेटिंग्स। सो फर्स्ट, कस्टम एडिंग ऑप्शन में जाना है। Click custom add option. You have to go on the camera menu to add the camera. While when you are adding your camera inside your NVR, select the custom add option. Custom add option आपको choose करना है. In custom add, you will get, there is a IP address. Type the IP address of the camera manually and select the protocol RTSP. That's most important. Select the protocol RTSP. So custom add में जाके वहाँ पे आपको वहाँ पे कस्टम ऐड का ऑप्शन पे ऊपर चूज करना है एंड उसके बाद वहाँ पे प्रोटोकॉल जो है ये आपका ये RTSP प्रोटोकॉल आप चूज कर सकते हो। So this protocol can be definitely will work for that. RTSP protocol is most important. So where RTSP protocol के जरिए आप ये कैमरास को यूज कर सकते हो। And when you are trying to add the RTSP protocol or the camera with the RTSP protocol, is this camera, there is RTSP protocol is configured in the backend. कैमरा तो आप RTSP प्रोटोकॉल के जरिए ऐड कर देते हो। नॉर्मल कैमरा, जनरल हिकविजन का कैमरा डेफिनेटली यू कैन एडिंग थ्रू हिकविजन प्रोटोकॉल, बट हियर वी आर एडिंग द कैमरा मैन्युअली आप कैमरा ऐड कर रहे हो। और मैन्युअली कैमरा अगर आप ऐड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वहां पे आपको जो प्रोटोकॉल है ये RTSP चूज करना पड़ेगा, नंबर 1। सो वी हैव सिलेक्टेड द RTSP प्रोटोकॉल, बट इज RTSP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर्ड इन द बैकएंड? यस, दैट वी नीड टू चेक फर्स्ट। ये प्रोटोकॉल आपने बैकएंड में कॉन्फ़िगर किया है या नहीं किया है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू फर्स्ट सेट द RTSP। कैमरा ऐड करते वक्त आपको कस्टम ऐड में जाके प्रोटोकॉल जो है ये RTSP चूज करके ऐड करना है, नंबर 1। बट उसके लिए आपको RTSP पहला सेट करना होगा। सो वेयर यू विल गेट द ऑप्शन मोर, okay, in custom adding that camera adding menu, you will get the option more, where when you click on the more button you will get the option of protocol, right? So जहाँ पे प्रोटोकॉल के ऊपर आप क्लिक करोगे, so you need to require to put the name, that is a RTSP, okay, because here you are creating a customized protocol. So I will put the name RTSP. Then type of the protocol I selected the RTSP. Port, that is always we know the RTSP port is a 554 for the cameras. I selected the 5 for port, and then after that you require to enter the path. This particular path that you require to always enter over here. So that is a special path is available if you are able to access the menu or user manual of your camera. Definitely you will get this path for the RTSP. Likewise, here we can understand the path. What is the path that you require to enter? You need to type the RTSP // then IP address 192.168.0.1, means whatever the IP address of your local IP address of your camera that you require to enter over here. And after that again a /, and over there you require to enter the 554 port. After that again / channel 1, then main /AV_stream. So likewise for the mainstream, this is a path you require to put over there and click on the OK. ये पाथ आपको डालना है यहाँ पे और OK के ऊपर क्लिक करना है। सो इस तरह आपने ये प्रोटोकॉल बैकएंड में आपने क्रिएट कर दिया है, कस्टम प्रोटोकॉल्स ये क्रिएट किया है जिसका नाम आपने दिया है RTSP. So what you required is simply to type the name, protocol name, select the type RTSP, and then you require to put the port 554, and then you require to put the path for this particular protocol. After this you require to click on the OK. So you have created in the backend. कैसे create करना है आपको, more setting में जाके प्रोटोकॉल में जाके ये custom प्रोटोकॉल आपको create करना है, and then after that यहाँ पे आप custom add option में जाके IP address उस कैमरा का डालिए, RTSP प्रोटोकॉल जो प्रोटोकॉल आपने सिलेक्ट किया, क्रिएट किया, उस प्रोटोकॉल को सिलेक्ट कीजिए, then you can put the username and password over here and you can add this camera. So hope you have understand कि RTSP प्रोटोकॉल के जरिए आप कैसे इस कैमरास को ऐड कर सकते हो।
कस्टम एडिंग के ऑप्शन के थ्रू आपको RTSP स्ट्रीमिंग के जरिए कैमरास को वहां पे ऐड करना है। सो दिस सेट RTSP स्ट्रीमिंग सेट किया एंड उसके बाद हमने कस्टम एडिंग में कैमरा ऐड कर दिया। Now, if you require to check is your camera will work with the RTSP or not, RTSP really work with the camera, there is a one more options we have available. How we can check? Simply आपने कैमरा अगर कनेक्ट किया है, आपको चेक करना है कि आपका ये कैमरा जो है ये RTSP के साथ वर्क कर रहा है। So वहां पे कहीं ना कहीं कैमरा if you are connected, you require to use the RTSP streaming, but do you want to make sure that really this RTSP is working with the camera? So there is one option to check that. There is one program we have available. You can download and install the program software, and definitely with that you can check that your camera is working with your RTSP protocol or not. So RTSP streaming के जरिए कैमरा को चेक करना है। Simply there is an option you have to check, or you can go on the RTSP, check the RTSP work. For that you require to open the VLC player. Yes, VLC player आप डाउनलोड कर सकते हो। ये VLC player के अंदर आप जाके वहां पे राइट क्लिक करोगे, then you require to choose the open media option you require to choose. In that open media there is an option available, open network. Click on that open network, then it will ask you in the network segment, it will ask you to enter the URL, RTSP URL for this. So you require to enter the RTSP URL with the username and password, then you require to enter for this, and then your live will get start on your VLC player. आपके VLC player में जो लाइव व्यू है आपका कैमरा का ये स्टार्ट हो सकता है। So with the help of this tool also you can identify is your RTSP working properly or not. Okay, so hope you have understand. A second problem we are discussing, a third party camera motion detection not working. So first of all हमने पहला प्रॉब्लम जो देखा, जो कैमरा IP कैमरा वहाँ पे वर्क नहीं कर रहा था, वहाँ पे कैमरा अगर ऐड करते हो डेफिनेटली ये कैमरा वर्क करके लाइव भी तो आ रहा था, बट ये कैमरा मल्टीपल NVRs में ऐड किए थे हमने। So due to this there is a time will get to continuously change for your IP camera. So we recommend always to add this camera through RTSP protocol in case of the multiple NVR. कैसे कैमरा RTSP प्रोटोकॉल के थ्रू ऐड करना है वो मैंने बताया। आपको कैमरा ऑप्शन में जाना है, कस्टम एडिंग में जाके आप मैन्युअली उस कैमरा का IP एड्रेस डाल के यूजर नेम पासवर्ड डाल के, बट प्रोटोकॉल जो है ये RTSP आपको सिलेक्ट करना है और आपके NVR में ऐड करना है। बट in backend first you need to set up the RTSP protocol. So जहाँ पे more setting में custom options में more settings में वहाँ पे नीचे options में जाके वहाँ पे ये जो प्रोटोकॉल है customized प्रोटोकॉल जो है यहाँ पे आपको create करके प्रोटोकॉल को simply choose करना है। Regarding the path, always it's guided on the Hikvision NVR. Always you can refer the user manual also. Now second problem that we have going to discuss, a third party camera. आपके Hikvision के NVR में आप third party cameras add करते हो, okay, and you will get the live view get started for this. But sometimes you will not get to get all the kind of the feature with third party camera. So that problem also most commonly most of the user ask to us कि थर्ड पार्टी कैमरा ऐड करते हैं Hikvision के NVR में, कैमरा का तो लाइव व्यू चलता है बट कुछ बाकी के फंक्शन जो है ये काम नहीं करते हैं। So what the cause for that, how we require to check for this solution is really third party camera support for that particular setting, that particular functions or not. So we will discuss on the problem number 2, the troubleshooting problem number 2, which most commonly asked by the user. Third party camera motion detection not working. Okay, so in this case what we can do over here, अगर थर्ड पार्टी कैमरा का मोशन डिटेक्शन नहीं हो रहा है, so you may cannot configure the motion detection in NVR. Yes, मोशन डिटेक्शन वहां पे नहीं चल रहा है तो आपके NVR से अंदर से आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हो, because the brand of the camera is a third party brand and your NVR is of Hikvision NVR. Definitely NVR does not allow to make the configuration or to do the function to draw the area or to clear the area. Such kind of the functions you will not able to get it in your NVR. So like way
मोशन डिटेक्शन यूज करना है, इनेबल किया है ऑलरेडी, वो तो आ रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको कॉन्फ़िगरेशन, इन डिटेल कॉन्फ़िगरेशन इफ यू रिक्वायर टू गो, सो लाइक वे you will get does not support this function, such type of error you will get, or you will get that you cannot able to customize your area in case of the motion detection. So third party camera, already there is a motion detection is available feature in that camera, and you are adding this camera in your Hikvision NVR, but you are not able to customizely configure this particular feature. So in this case, what the solution or how we can troubleshoot this problem, how we can check this problem. So here I recommend you that first run the on-whip device manager. Yes, on-whip device manager is a tool, because if you are adding the third-party camera through on-whip protocol, we require to check this camera definitely support the on-whip protocol, then which kind of the profile it support, and this camera supporting this kind of the functions or not. So where you require to first download and run the on-whip device manager, add this camera. For that you require to enter the URL, that is the IP address for this camera, and require to click on the apply. And after adding that, click on the logout and again type the username and password for this device, and this camera will get connected with this software. So basically on-whip device manager के अंदर आपको जाके आपको ये cameras को वहाँ पे add करना है. Then you need to check the events, that you will see a lots of event information related with that third party camera. So this camera will definitely help you give the information for the identification, क्या मॉडल नंबर है कैमरास का, जो भी थर्ड पार्टी कैमरा है, फर्मवेयर वर्जन उसका कौन सा है, आईपी एड्रेस क्या है, what kind of the function it can provide, that also you will get identified, as well as you will get the live view of this camera on the on-whip device manager. अगर आपको वहाँ पे live view नहीं मिल रहा है, तो definitely this camera is not supporting for that particular on-whip communication. So through this on-whip device manager tool जो है, इसके थ्रू आप ये थर्ड पार्टी जो कैमरा है जिसके अंदर आप कॉन्फ़िगर मोशन डिटेक्शन की एनालिटिक्स जो है ये कॉन्फ़िगर नहीं कर पाते, इसके लिए आप इस ऑन-whip डिवाइस मैनेजर में जाके आप चेक कर सकते हो दिस कैमरा इज सपोर्टिंग दिस काइंड ऑफ द फंक्शंस और नॉट. सो दैट वी हैव अंडरस्टैंड हाउ टू थर्ड पार्टी मोशन डिटेक्शन का अगर इशू है, हाउ कैन चेक दिस पर्टिकुलर इशू. Third question is that we are going to discuss on the how to change the device name and channel name on Hik-Connect. Okay, Hik-Connect के ऊपर most of the आप cameras add करते हो, devices add करते हो. So most probably what happen, you are adding this cameras, IP camera or directly your NVR on the Hik-Connect. But whenever there is a multiple devices get added on Hik-Connect, you require to identify that devices with that particular device name. कैमरा और एनवीआर तो बहुत सारे आपके Hik-Connect के अंदर आप ऐड किए, पर आपको जब चेक करना होता है तब आपके पास वहाँ पे कैमरा का नेम जो है ये आपको लोकेशन के हिसाब से वहाँ पे मिलना चाहिए, ये भी रिक्वायरमेंट है, और यू नॉट एबल टू एडिट दैट पर्टिकुलर थिंग्स इन योर मोबाइल एप्लीकेशन. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट? कौन से सिचुएशंस के लिए आप इस कैमरा और इस डिवाइस का एनवीआर का नेम जो है ये Hik-Connect ऐप में आप एडिट कर सकते हो, that you require to check for this. So we will understand कि क्या most probably वहाँ पे causes है, किस वे से आप Hik-Connect ऐप पे ये जो नाम है आपके कैमरा का और एनवीआर का ये आप एडिट कर सकते हो. So we'll find out the solution on this. Okay. So when we add our devices, जैसे मैंने डिस्कस किया था, जब when we add these devices on your Hik-Connect app, so the device name and the channel name is important because it's recognized the different devices. So that's why, but we're not able to change that. So what is the reason for that? कब जो है आपका जो डिवाइस का नेम है ये आपका वहाँ पे दिख सकता है, that we first identify. So first that when you add a device via Hik-Connect Cloud, okay, your device is connected over the online on the internet. Okay, your mobile application is connected on the cloud. You're also remotely on the internet and you're trying to add these devices. Definitely you can add this device through cloud. So for this condition, the device name and the channel name on the Hik-Connect app will be get synchronized. And due to this, definitely जो भी आपके डिवाइस को नाम दिया है और जो भी आपके कैमरा को नाम दिया है, ये आपके जो है
आपके मोबाइल एप्लीकेशन में है, ये नाम आपको दिख सकता है. So but still if required to configure, if you require to add this name, or if you require to change this device name of your NVR or the IP camera, just you require to click on the setting and then you require to go on the change device name. So here there is a setting is available. We can see this settings is available at the right side. You require to click on the right side where the change device option is available. The change device name where you can type or enter the device name which you want. Then link camera, click on this arrow, then you can change the name of the particular channel also. So ये आपको मदद करेगा आपकी मोबाइल ऐप के ऊपर. आपको नाम चेंज करना है आपके NVR का या आपकी कैमरा का, you can definitely change this. सेकेंड, ये करने के बाद भी आपका ये नेम तो चेंज हो जाएगा, बट देयर इज अ प्रॉब्लम वी आर फेसिंग. बट इफ योर डिवाइस आर नॉट सिंक्रोनाइज, मोबाइल के ऐप के थ्रू, मतलब हिक-कनेक्ट क्लाउड के थ्रू आपने डिवाइस को ऐड किया है, बट स्टिल आपका जो कैमरा या डिवाइस है ये सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है क्लाउड के साथ, सो डेफिनेटली ये नेम चेंज है, ये आपको सपोर्ट वहां पे नहीं देगा. ये नेम चेंज करने के लिए आपको वहां पे सपोर्ट नहीं मिल सकता. So in these cases, you can go on the www.hik-connect.com, and to set the device name, you need to log in on the hik-connect.com, and there you can able to change the device name, but the channel name cannot be changed. So simple है, आप मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आप Hik-Connect के अंदर आपका कैमरा अगर ऐड कर रहे हो, in that situation through a cloud, when you are adding the camera, it can be get added. Now if required to change the name, go in the settings, okay, change name, you can edit the name of your mobile, of your NVR, of your IP camera. But still the problem is facing, if your synchronization not happening with your device and your mobile application in the cloud, then what you want to do, separately go on the browser, log in the hik-connect.com, log in your device, or log in your Hik-Connect account, and then in that you try to change the device name, but you cannot change the channel name over there. So ऐप के जरिए आपका चैनल चेंज नहीं हो रहा है, डिवाइस नेम चेंज नहीं हो रहा है, आप Hik-Connect क्लाउड पे जाके ये डिवाइस नेम को आप चेंज कर सकते हो. So this is most common query asked by the most of the user कि हमारा जो है Hik-Connect ऐप के अंदर यहाँ पे जो नेम चेंज करना रहता है डिवाइस का, वो नहीं. Second option, if you are trying to add via IP address and domain, okay, domain name के जरिए होता है, IP address के जरिए अगर आप ऐड कर रहे हो कोई भी डिवाइस आपके Hik-Connect ऐप में, then at the right side top there is a 3 dots will be available. On this icon, if you click on the, that is a setting button, if you click on the setting button, definitely you will get these 3 dots, where if you require to click, you can click on that and you can change the name of your channel or your device. So IP एड्रेस के जरिए और डोमेन नेम के जरिए अगर आप Hik-Connect ऐप में आपका डिवाइस ऐड करोगे, definitely you can change the name. Then add via IP address and domain. Again, there is a one more options that click need to 3 dots. In 3 dots, you need to edit this name of your simply your of device. You can save it. Simple options available है. Now, next question number 4. That is a NVR cannot view via Chrome. So that also most commonly question are raised कि browser के ऊपर login जब करते हो, most probably if you are logging this NVR on the browser and you are trying to view the NVR remotely on the web page, your NVR is not able to show. So especially this kind of the problem most users are facing. So what we are going to provide the some solution, some troubleshooting on that. With the help of this troubleshooting, Google Chrome के ऊपर आपका जो NVR है ये वहाँ पे चालू हो सकता है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो और आप ये लाइव व्यू वगैरह देख सकते हो. सो गूगल क्रोम के ऊपर अगर आपके NVR जो हिकविजन के नहीं चल रहे, वहाँ पे कुछ इश्यूज आ रही है, तो कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पे ये ट्रबल शूटिंग सॉल्यूशंस यहाँ पे मैं ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ. डेफिनेटली दिस विल हेल्प फॉर यू, बट यू नीड टू फर्स्ट चेक is your NVR really support for the Google Chrome, that particular model is really support to get the access on the Google Chrome or not, ये पहला जानना जरूरी है. So that first we will need to understand NVR cannot able to view on the Google Chrome. So first of all check
that you require to get is your NVR is supporting or not. So please kindly note that the following NVR model do not support to get the live view via Chrome. So these are the model number like the 76K1 series, 76Q2/P series, 71NI Q1/P series. These are the some series models which is not able to support on the Google Chrome. So that you require to make ensure. It is recommended to download the IBMS 4200 to get the access of your NVR and get the live viewing. We recommend to download the IBMS 4200 instead of Google Chrome to get the remote viewing of these NVRs. Now, apart from that, if this model is not available with you and you have a different model other than this, still if you are facing with the Google Chrome issue, then what is the solution for this? NVR cannot view via Google Chrome. There is a different model. There is a 4 ways that we are providing the solution for this. तो 4 यहाँ पे solutions है, यहाँ पे हम provide कर सकते हैं. First, switch protocol. You require to switch the protocol, reduce the bitrate, switch encoding type, and reduce the video output channel. Yes, definitely, if you are not able to access this NVR, your NVR via Google Chrome, so there is some issues we need to check it. One by one check करते हैं. NVR cannot view via Chrome. So for that, what you require to do it, just go in the access your NVR on your browser, get login, but you are not able to view this. So that's why there is a configuration setting you require to go first of all in your NVR, because you are not getting the live view streaming over there on your Google Chrome. Go in the configuration, go in the local option, and there is a protocol which you require to check it. If there is a TCP, you can change it to UDP. If there is a UDP, then again change back to the TCP and try again after saving this setting. Is you can able to view these cameras on your Google Chrome or not. Second, if you are going to solution for this, NVR cannot view via Chrome. So second solution over here, some devices support the network resources statistic. कुछ NVR है, ये network resource statistics support कर सकते हैं. इसके लिए आपको configuration में जाना है, maintenance में, यहाँ पे network resources options available है. This network resource statistic which having the bandwidth, it should be is equal to the letter 1. So ये अगर bandwidth है, ये आप reduce करते हो, definitely you can get the live view of your cameras on the Google Chrome. So incoming bandwidth है, ये आपने थोड़ा reduce किया, definitely you will get the live view. How we can achieve this? So turn to the configuration page. Configuration page में जहाँ पे जाना है, जहाँ पे आप video and audio जो है उसका configuration आप कर सकते हो. So likewise, where you can go in the configuration page, the video option is available, where you can set the resolution of your cameras. You can drop down the resolution of your cameras, or you can select the proper resolution of your cameras, and then you can change the bitrate. So likewise, the solution is that bitrate जो है आपके cameras के उस particular channel के आप minimize करो, आप change करके देखो, and definitely you will get the live view start of your cameras on the Google Chrome. One more solution that over here they have mentioned, please set your NVR video encoding type as your camera support, right? So if your NVR video encoding type is H.264 and your camera is of the H.265, how it can be work perfectly? So likewise, you need to make sure that your camera only supports the H.264, and please select switch NVR encoding to H.264 only. लेटेस्ट कैमरा जो आपको भी पता है कि H.265 इनेबल रहते हैं. अगर आपका कैमरा H.265 है एंड NVR वहाँ पे H.264 एनकोडिंग फॉर्मेट ही सपोर्ट कर रहा है, it will not work, not able to access this NVR and start the live view on Google Chrome. So that settings you need to check, take care for this, how we can provide this kind of troubleshooting solution whenever you are facing such kind of issue. So this is the problems we have seen. Again,
NVR cannot able to view on the Google Chrome. One more reason there is an option available. If your NVR support the multiple video output interface, yes, like the HDMI, VGA, or any kind of the more multiple video output interface, and this with multiple video output interface, you have configured the multiple channel. So multiple video and output interfaces. So for example, HDMI है, second output interface है, VGA है, and you configured on both the options. You have configured the channels on this particular page. Then definitely this will occupy the encoding ability of your NVR. This also may cause the reason why your NVR is not providing the live view on the Google Chrome. So आपको यहाँ पे अगर मल्टीपल आउटपुट वीडियो इंटरफेस मिल रहे हैं, VGA भी मिल रहा है, HDMI मिल रहा है, आपने कौन सा डिस्प्ले लगाया है वो चेक कीजिएगा और उसी डिस्प्ले को ही आप आपके जो चैनल्स है वो कॉन्फ़िगर कीजिएगा। अगर आप VGA ऑप्शन नहीं यूज कर रहे तो वहाँ पे कुछ चैनल्स को वहाँ पे ऐड मत कीजिएगा इस मेनू के NVR के सेक्शंस में। So definitely this will help you to start get the live streaming on your Google Chrome. So that is one more possible results that we have discussed. Again, yes, we are going to discuss on the playback, but before this, again, I like to check. Yes, some people are saying I have some problems about this NVR regarding the configuration of the NVR. Definitely, yes, sir. You can ask for the configuration, what kind of the problems you are facing, or which kind of the settings you require. Definitely, we'll try to get back to you for your queries. तो हमने देखा था कि ये ट्रबल शूटिंग कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे हैं आईपी कैमरास एंड एनवीआर के बारे में. सो नाउ वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन हाउ टू यूज द आरटीएसपी स्ट्रीमिंग को अगर आपको यूज करना है तो आप कैसे यूज कर सकते हो. देन after that we have checked that if you require to add this camera, that means third party camera, if you require to add and you are not able to enable the motion detection or not able to configure the motion detection area, a customer is not able to draw that particular area, then how we can use the on-wheel device manager tool. सो आपका जो थर्ड पार्टी कैमरा है फर्स्ट ऑफ ऑल SNG प्रोफाइल सपोर्ट करना चाहिए ऑन विव का डेफिनेटली. उसके बाद ही आप ये अलग अलग जो सेटिंग्स है ये आपके NVR के थ्रू आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो और वो चेक करने के लिए आप ये ऑन विव डिवाइस मैनेजर टूल के जरिए ये थर्ड पार्टी कैमरा ऐड करके उसको आप चेक कर सकते हो. दिस ऑल द प्रोफाइल्स एंड द सेटिंग्स आर अवेलेबल एंड दिस फंक्शंस इज सपोर्ट बाय दैट पर्टिकुलर कैमरा ऑन बोर्ड. थर्ड हमने ट्रबल शूटिंग डिस्कस किया कि हिक-कनेक्ट ऐप. हिक-कनेक्ट ऐप के ऊपर कोई भी अगर डिवाइस आप ऐड करते हो तो मल्टीपल डिवाइसेस जब रहते हैं यू रिक्वायर द डिवाइस अ नेम टू चेंज. सो समटाइम्स इफ योर device is not able to get synchronized with the cloud, you're not able to change the device name through mobile application. So in this case you require to browser separately. ब्राउजर के ऊपर आप hik-connect.com को लॉगिन करो. आप वहां पे लॉगिन करने के बाद डिवाइस का जो नेम है ब्राउजर के थ्रू उस क्लाउड के आपके उस अकाउंट में जाके उस डिवाइस का चेंज कर सकते हो. सो दैट मोस्ट ऑफ द सेटिंग्स हमने चेक की. अलग अलग जरिए आईपी कैमरास आप ऐड कर ले हो, लाइक आईपी एड्रेस आईपी सर्वर के थ्रू या डोमेन के थ्रू या आईपी एड्रेस के थ्रू सिंपली आप हिक-कनेक्ट में ऐड करते हो विदाउट क्लाउड. सो डेफिनेटली कैन चेंज द नेम इजीली थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन. गूगल क्रोम की बात करें, गूगल क्रोम के बारे में मोस्ट ऑफ द लोगों को इशू आती है. गूगल क्रोम के ऊपर आप एनवीआर को ओपन नहीं कर सकते थे लाइव व्यू. सो कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पे मैंने बताया, जैसे कि आप कैमरा का जो बिटरेट है ये ड्रॉप डाउन कर सकते हो. वहाँ पे कुछ जगह पे जो वीडियो आउटपुट इंटरफेस है जहाँ पे मल्टीपल आउटपुट इंटरफेस पे अगर आपने चैनल कॉन्फ़िगर करके रखेंगे तो ही ये आपको इश्यूज वहाँ पे आ सकती है. उसके साथ TCP एंड UDP ये आपका प्रोटोकॉल जो है ये TCP के TCP से आप UDP के ऊपर चेंज करते हो, देन भी आप उसके बाद भी आपको ये इशू शायद सॉल्व हो सकता है. So you need to troubleshoot with these steps and check yes your issue is resolved or not. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इशू और एक हम डिस्कस करने जा रहे थे जहाँ पे हाउ टू कॉन्फ़िगर इवेंट प्लेबैक ऑन NVR GUI. डेफिनेटली GUI है NVR का ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत ही स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे दिया है. कैमरा इज एडेड इन रिकॉर्डिंग कंटिन्यूअसली ऑन योर NVR. 24/7 रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल ऑन योर NVR. Now it's a time of to check the playback. Playback का जब टाइम है, इस playback जब चेक करते हो तो क्या आप स्मार्टली playback कर सकते हो? Yes, definitely there is a smart playback option available, but still the people are facing the issue to get this smart playback. जहाँ पे कैसे ये इशू को सॉर्ट आउट करना है ये हम देख सकते हैं. So here the smart playback issue is happening.
ensure the camera has enabled the dual VC. So first of all, सबसे important settings कैमरास के अंदर है, जो आप वीडियो एंड ऑडियो में जाओगे, देन वो पर्टिकुलर कैमरा चूज करना है जिसका स्मार्ट प्लेबैक आपको चलाना है, और यहाँ पे ड्यूअल VCA को इनेबल करना है। ये इनेबल करके आपको सेव करना है। ये फर्स्ट सेटिंग आपकी इनेबल चाहिए। देन दिस कैन बी हैपन बाय एक्सेसिंग दिस पर्टिकुलर डिवाइस ऑन द ब्राउजर के ऊपर डिवाइस को एक्सेस करके वो पर्टिकुलर कैमरा चूज करके ड्यूअल VCA जो है ये आपने इनेबल किया। देन गो टू डिवाइस मेनू, आप NVR के मेनू में जाओ, GUI जो रहता है NVR के अंदर, उसके अंदर जाके एडवांस सेटिंग्स आपको मिलेगी। स्टोरेज के शेड्यूल्स के इसमें एडवांस सेटिंग जहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे रिकॉर्ड शेड्यूल में एडवांस सेटिंग में जाने के बाद यू रिक्वायर टू इनेबल द सेव कैमरा VCA डेटा। ये एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है, सेव कैमरा VCA डेटा। ये सेटिंग को आपको इनेबल करना है, दैट यू रिक्वायर टू इनेबल इट एंड क्लिक ऑन द अप्लाई। सो दिस इज द नंबर 2 सॉल्यूशन where you require to save camera VCA data। ये enable करके आपको save के ऊपर apply करना है। So that we have to understand। Then third, that is a step 3, go in the playback option। Okay, click on the, when going the playback option, choose the particular camera। Okay, start the playback for that, and then there is a right side corner, there is a event rule you need to apply। So click on the event rule, you can draw the line, you can draw the area, click on the search, definitely the smart playback you will get it over here। So like where you can just simply in a playback option in the playback clip, you require to draw the line over there, okay, and click the search, and you will get that particular footage directly, that is called as a smart playback। It will save your playback time। बट ये स्मार्ट प्लेबैक नहीं चल रहा है, सो अलग अलग मैंने ऑप्शंस आपको बताए। आपको ड्यूअल VCA जो है ये इनेबल करना है। देन यू रिक्वायर टू आल्सो गो इन द NVR, यू रिक्वायर टू सेव कैमरा VCA डेटा, ये सेकंड सेटिंग्स आपको इनेबल करनी है। देन यू रिक्वायर टू सर्च द प्लेबैक, गो ऑन द ऑप्शन, ड्रॉ एनी एरिया, क्लिक ऑन द सर्च। वो पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई भी मूवमेंट अगर होता है या कोई पर्सन्स वहां पे आते हैं, उसी टाइम के क्लिप्स आपको स्मार्टली NVR आपको प्रोवाइड करेगा। That way you can get the a smart playback। So like में इवेंट के जो रूल्स है, ये इवेंट के रूल जो है ये वहाँ पे अप्लाई करके आपको स्मार्ट प्लेबैक चलाना होता है। बट कभी कभार आप NVR में वो नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू डू और नॉट एबल टू गेट फंक्शंस विद दिस पर्टिकुलरली फीचर्स। सो फॉर दैट थिंग्स देयर इज सम इम्पोर्टेंट सेटिंग जो है ये मैंने आपको वहाँ पे बताया। Hope you are always using the smart playback in your NVR। आप playback में जाके राइट साइड में वहाँ पे स्मार्ट प्लेबैक ऑप्शन से वहाँ पे जाके इस प्लेबैक को चेक कर सकते हो। बट अगर वर्क नहीं कर रहा है तो आपको कुछ मैंने सेटिंग्स बताई, ड्यूअल VCA को इनेबल करना है एंड सेट VCA डेटा जो NVR के GUI के अंदर सेटिंग्स है, इसको आपको इनेबल करना है। डेफिनेटली दिस स्मार्ट प्लेबैक जो है ये आपका वर्क करेगा। सो VCA रूल तो आप इसके अंदर अप्लाई करके ये स्मार्ट प्लेबैक को चला सकते हो, and definitely this can be worked। So these are the most common problem we have seen with this Hikvision IP cameras and the NVR। We have seen about the RTSP protocol, and again we have seen about the Hik-Connect application के अंदर नेम को चेंज करना है, कैसे कर सकते हैं, ऑन-व्हील थर्ड पार्टी कैमरास को ऐड करना है और उसको चेक करना है उसके फंक्शनिंग प्रॉपर है कि नहीं, हाउ वी कैन यूज ऑन-व्हील डिवाइस मैनेजर टूल। एंड इसके साथ साथ हमें अगर चेक करना है कि गूगल क्रोम में आपका ये जो है NVR लाइव व्यू प्ले नहीं हो रहा है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सेटिंग एंड ट्रबल शूटिंग यू रिक्वायर टू डू, एज वेल एज स्मार्ट प्लेबैक नहीं हो रहा है तो हम कैसे कर सकते हैं। So hope you have understand today's troubleshooting about the CCTV cameras and NVR, and some people are connected. If you want, you can ask your problems, question, will definitely try to give the answer। And also in the backend, if you are typing your queries in this comment section, we'll definitely try to reach you, and after this session also we will try to provide the queries answer for your queries also। And hope you have understand what we have discussed। सो आपको पता चला होगा कि IP कैमरा NVR के अंदर कुछ ट्रबल शूटिंग के पॉइंट्स है। ऐसे बहुत सारे क्वेरीज और बहुत सारे इश्यूज जो है आप साइट पे फेस करते हो, एंड डेफिनेटली वी आर गेटिंग दैट इनपुट्स, एंड बेस्ड ऑन दैट योर प्रॉब्लम्स ओनली आई एम कमिंग विथ यू इन दिस टेक्नोलॉजी टॉक टू डिस्कस एंड टू टॉक ऑन द ट्रबल शूटिंग issues and the best solution which we can provide। So definitely
In future also अगर आपको कुछ ऐसे issues face होते हैं, you can contact to us and we will try to make the technology talk session separately on these particular problems. Definitely we will help you to do the best installation configuration of your Hikvision IP cameras and the NVR system across your end users. So hope आज का सेशन जो है ये आपको अच्छा लगा होगा एंड आपको कुछ नई चीज, नई कॉन्फ़िगरेशन या नई ट्रबल शूटिंग जो स्टेप्स है या नए प्रॉब्लम्स है, कुछ लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस भी नहीं किए होंगे बट स्टिल आपको आज पता चला होगा अगर फ्यूचर में ये से प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप कैसे उसको टैकल कर सकते हो। कुछ नई चीज हमने देखी जैसे RTSP प्रोटोकॉल के जरिए, RTSP स्ट्रीमिंग के जरिए आप डायरेक्टली कैमरा जो है आपके NVR में ऐड कर सकते हो। मल्टीपल वे के लिए उस RTSP स्ट्रीमिंग का भी आप यूज कर सकते हो। And hope you have definitely got some kind of the information, and if you have any kind of the doubt you can type in the chat box, and otherwise you can back end you can contact to us and we will try to definitely reach out to you and help to solve your problem. So thank you so much for joining today for this CCTV troubleshooting topic, and next again we will come up with a new technology, new topic and a new session of the technology talk. And till then, just take care and have a nice day ahead. And let's enjoy this technology talk with upcoming session also. Thank you so much.